विशेषाधिकार की परिभाषा बताना थोड़ा कठिन काम है। कभी कभी हम सोचते हैं कि ये उन लोगों के पास होते हैं जिनके पास अधिक पैसा या अधिक शक्ति हो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसे सिर्फ फिल्मों में होता है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि विशेषाधिकार हमारी जिंदगी में सामने दिखने वाले लाभ हैं, लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो आखिर विशेषाधिकार क्या है और हमें अपने विशेषाधिकारों के बारे में कितनी जानकारी है? इन सवालों के साथ हम निकले हैं बोगोता की गलियों में लोगों से बात करने। उनके विचार जानने के लिए हमने कुछ मर्दों से पूछा कि उनके हिसाब से औरतों के क्या विशेषाधिकार हैं। Yo pienso que las mujeres, por ejemplo, cuando son mamás, tienen el privilegio de que los hijos van a sentirse pertenecidos a ellas más que a sus papás. Esto es algo que yo evidencio en mi vida, en la de mis primos, en la de mis amigos. Creo que uno tiene una conexión con la mamá inevitable y con el papá es una conexión también, pero no es del mismo. Multiplying. I'm not sure if I should call it a privilege, but one of the things that I could think of as a thing that women are allowed to do according to the gender roles and the gender norms that we have here in society is the possibility of being vulnerable in emotional terms, and women are expected to show their emotions. And not only that, but I have found from my perspective that they are allowed to express their feelings to their peers. फिर हमने उनसे पूछा कि उनके खुद के क्या विशेषाधिकार हैं। What do you mean? Normalmente las mujeres no son las victimarias, entonces tenemos todos los privilegios y la libertad y la hemos usado pues para hacer el mal. Es lo que yo he podido notar ahora que trabajo como profesor en estos procesos, porque me ha hecho cambiar un poco, he ayudado a cambiar la imagen que tienen las personas de los hombres. I think men have most of the privileges here in our society. And I say this as a gay man, which means that some of those privileges will be contested due to my sexual orientation. But still, I do think that I have benefited of some of these, or most of these privileges. बात तो सही है। What are these privileges that I'm talking about? I could talk endlessly about it, but I'm going to restrict my answer to 3 areas. The first one would be men on the streets in our cities. Men can feel safe walking down the street and walking around and running errands without this constant fear that my female counterparts have always expressed to me that they feel when going out. Like, it's a very extreme contrast between how women here experience the streets and how women experience the streets. Women feel that men are going to harass them anytime, that they are always threatened by their gaze, by the way they look at them and the way they stare, because that's a confirmation that they actually own the street, that the street is theirs, it's their space, or it's our space even. So I think that's a privilege, because I don't feel that way when going out most of the time. It's a complete different perspective and a different way of inhabiting my city compared to how women do here. The second area in Colombia is more in the private sphere. Women are always burdened with having to think constantly how to run a home, how to run a house. Men don't have to do that. They can always rely on women for that, even if they are the ones that earn more money. Women are the ones to blame sometimes for how a house is neglected or not, or how a house is running as it should or not. And I think it's pretty unfair, and I have lived that in my own family dynamics with my parents. My father was always the one who has the highest income, but my mother was always the one worrying about everything for running the house, even how money should be administered and how it should be budgeted. She also had her own job to respond to, so it's like she had many jobs to accomplish, and my father should only worry about his job, his professional career, and sometimes playing games with his children, but not much more beyond that. And it has reflected on my mother's welfare. She suffers from several conditions
questions associated with dress. And I think that's another male privilege that my father has enjoyed and that I did enjoy when growing up. And the third area is the access to high-profile jobs. And I do consider that's part of structure that encourages women to pursue their own career interests, but at the same time limits them and restricts them and constrains them and questions them if they don't start their own families before they turn 30 and things like that. यही सवाल हमने औरतों से भी पूछे उनके खुद के विशेषाधिकारों के बारे में। Settle down there. Para las mujeres también hay privilegios en cuanto al mundo laboral, en cuanto al mundo educativo, a la educación superior, en cuanto a la moda. Ha cambiado bastante y las mujeres pueden tener más acceso a diferentes privilegios. Unbelievable. Los privilegios que tenemos las mujeres en una sociedad como Colombia o en una ciudad como Bogotá tienen que ver muchas veces con tal vez el cuidado que podemos tener en nuestro círculo más cercano, a quienes contamos con una red de apoyo o con familia, y también quienes tenemos un poder adquisitivo monetario en poder ser independientes económicamente. क्या? फिर हमने औरतों से मर्दों के विशेषाधिकारों के बारे में पूछा। Considero que los privilegios que tienen los hombres, pues más oportunidades laborales frente a las vacantes, más oportunidades laborales en el campo también, por ser hombres, de pronto por la fuerza que ellos emplean. चक्कर क्या है समझ में नहीं आया यार। Los privilegios que he observado que tienen algunos hombres, la ciudad en Bogotá o en Colombia, es acerca de su trabajo o de adquisición monetaria en sus espacios laborales. Usualmente me he encontrado con que los hombres pueden ganar más que las mujeres, o por ejemplo yo he ocupado cargos o he ejercido en algunos proyectos que los hombres tienen mayoritariamente un pago más alto que nosotras las mujeres. विशेषाधिकार सिर्फ इंसान के जेंडर या लिंग पर आधारित नहीं होते, बल्कि हमारी पहचान के बाकी हिस्सों पर भी निर्भर करते हैं। खुद सोचिए, क्या आपको गलियों में अकेले चलने पर घबराहट महसूस होती है? क्या आप बिना डरे अपने साथी की पहचान जाहिर कर सकते हैं? क्या आपको चिंता होती है कि सार्वजनिक स्थानों में जाने में आपको आसानी होगी? हमारे विशेषाधिकार सिर्फ समाज में हमारे ओहदे, पैसे या शक्ति से नहीं, बल्कि और भी कई चीजों से जाहिर होते हैं। सुरक्षित महसूस करना एक विशेषाधिकार है, आज़ादी एक विशेषाधिकार है, अपने आप को अपना पाना एक विशेषाधिकार है। भारत में त्वचा को गोरा करने वाली क्रीमों के इश्तिहार काफी आम हैं, जिनमें कभी वो लोग भी होते हैं जो भारतीय होते ही नहीं हैं। इसलिए गोरा बनने का दबाव ना महसूस करना, गोरा बनाने वाली क्रीमों या ब्लीचों पर पैसा ना खर्च करना, ये मेरे कुछ विशेषाधिकार हैं। बात तो सही है। गलियों से अकेले गुजरते हुए सुरक्षित महसूस करना, या सूरज ढलने के बाद भी घर से बाहर रह पाना, ये कुछ ऐसे विशेषाधिकार हैं जो आज भी कहीं औरतों को नहीं मिलते। What? एक अमेरिकी कार्यकर्ता और विद्वान पेगी मैकिन्टोश कहती हैं कि विशेषाधिकार कुछ ऐसे लाभ या सुविधाएं हैं जिनके बारे में हम अचेत होते हैं, या जिन्हें हासिल करने के लिए हमें अलग से कोई कदम नहीं उठाने पड़ते। सबसे पहली परेशानी ये है कि बहुत से लोग ये नहीं जानते कि विशेषाधिकार का मतलब क्या है, और दूसरी ये कि उनके विशेषाधिकार हैं कौन से। हमारे कुछ विशेषाधिकार ऐसे होते हैं जो हमें हमारी मेहनत की वजह से मिलते हैं, और कुछ ऐसे जो हमें सिर्फ हमारी पैदाइश से मिल जाते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ है उसकी वजह से मुझे एक अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका मिला, पौष्टिक खाना खाने को मिला, रहने को आरामदायक घर मिला, लेकिन हर किसी को ये सुविधाएं इतनी आसानी से नहीं मिलती। आज भी भारत की 74% आबादी पौष्टिक भोजन नहीं खरीद सकती। तो ऐसे विशेषाधिकारों के प्रति आंखें खोलने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मेरी बात सुनो, इधर आओ। सबसे पहला कदम उन पहचान समूहों का पता लगाना है जिनसे हम संबंधित हैं। Come on, what are you waiting for? फिर ध्यान दीजिए कि इनमें से किन पहचानों की वजह से आपके साथ कुछ गलत होने की अधिक संभावना है, और किन की वजह से आपके पास विशेषाधिकार है। एक, टेंशन नहीं लेने का। जब आप उन समूहों को पहचान लें जिनकी वजह से आपको पैदाइश से विशेषाधिकार मिले हों, चाहे वो आपका लिंग या आपका धर्म हो, तो दूसरे यानी कि आपके विशेषाधिकारों से वंचित समूहों के लोगों से बात करें। इसी से हमें कहानी का दूसरा पहलू पता चलता है। Any questions? आखिर में कदम बढ़ाइए और अपने विशेषाधिकारों का समाज में समानता लाने के लिए इस्तेमाल कीजिए। कैसे?
अपनी आवाज उठाकर और दूसरे पक्ष के लोगों के साथ हाथ मिलाकर। So basically what you are saying is नीचे कमेंट कीजिए कि आप अपने विशेषाधिकारों का दूसरों की मदद करने के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे। टेंशन काय को लेते हो? अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। figure not.